हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लास्ट वेंचर लाइफ हैक्स। आज हम फॉक्सेट फैंटम पीडीएफ एडिटर यूज़ करेंगे किसी पीडीएफ में स्टैम्प्स डालने के लिए अगर उसमें मल्टीपल पेजेस हैं, बिकॉज फोटोशॉप में बहुत सारे पेजेस पे स्टैम्प डालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें आप एक ही टाइम पे डाल सकते हैं सभी पेजेस पे स्टैम्प। ये इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पे आई एम डाउनलोडिंग द सैम्पल पीडीएफ एंड सैम्पल स्टैम्प। और फिर उसके बाद आपको जो सैम्पल पीडीएफ है उसको आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है आप हमारे फॉक्सेट फैंटम पीडीएफ में, या फिर उसको राइट क्लिक करके ओपन विद फॉक्सेट कर दो एंड देन लुक फॉर फिल एंड साइन। फिल एंड साइन पे क्लिक करते ही सेलेक्ट कर दो ये ग्रीन प्लस साइन, देन और फिर उसके बाद एक पॉपअप विंडो खुल जाएगी। वी आर हैविंग 5 ऑप्शंस। वी कैन ईदर ड्रॉ सिग्नेचर, इंपोर्ट फाइल, पेस्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड, टाइप सिग्नेचर और ऑनलाइन सिग्नेचर। हम पेस्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड करेंगे। फॉर दैट वी नीड टू कॉपी सम पिक्चर टू आवर क्लिपबोर्ड। तो हम हमारा स्टैम्प खोल रहे हैं और स्निपिंग टूल यूज़ करेंगे। स्निपिंग टूल इनबिल्ट टूल होता है विंडोज 10 में, सो यू जस्ट कैन सर्च फॉर इट। फिर उसका सिलेक्शन कर लो और कंट्रोल सी से कॉपी कर लो या फिर ऊपर का कॉपी बटन दबा दो एंड देन जस्ट पेस्ट फ्रॉम द क्लिपबोर्ड एंड अनचेक द ऑप्शन कन्वर्ट सिग्नेचर टू ब्लैक एंड वाइट एंड देन क्लिक ऑन सेव बटन and just place the stamp wherever you want to place it. You can place as many stamps as you want in a single selection, and then thereafter you just have to save the file. Friends, this Foxit PDF editor can even be used for editing the text as well. You just have to double click on the text and then you can rewrite the text as you write in the Word. It's a very handy software. And that's all for the video. If you like my video, please do subscribe, like, share and comment on my channel. It will motivate me for making more such videos.